Dear students, good morning. I hope you all are in fine health. So, we had started revising chapter number 1, Introduction to Political Science and State, and we revised two long questions of this chapter. Now, we will revise next question. Explain any four differences between state and nation, or contrast the concept of state from nation. It means in this question, we are to write the differences between state and nation. So the answer to this question is given on page 1.29. Okay, so there are total 10 points of difference between state and nation, and we are to write any 4 points here. Okay, so first point is the element of state and nation are different. So first major difference between state and nation is its elements. The elements of state, we all know they are four in number: population, territory, government, and sovereignty. But the elements of nation are common religion, common territory, common language, common history, common culture, and common political aspirations. Okay, so second point is state is a political organization while nation is a human unity. So state is a political organization which fulfills the needs of the people like security and welfare. Okay, and moreover it is concerned with the external actions of human beings. On the other hand, state is a group of people which governs the psychological, emotional, and spiritual aspect of our lives. Okay. Third point is definite territory is essential for the state but not for the nation. So territory is an element of state, but for nation, definite territory is not required. For example, the people belonging to Punjabi nation means the Punjabi people, they are living in India also, they are living in Pakistan also, they are living in America, Canada, Australia, United Kingdom, and other parts of the world also. So, territory is important element of state, but for a nation, definite territory is not required. Fourth point is sovereignty is essential for state but not for the nation. So we know that sovereignty is an essential element of state. It is required for only state. Okay, sovereignty is not the element of nation. For example, India as a state was born on 15th August 1947. But India as a nation, it was there before 15th August 1947 also. Other example is Japan. So when the Americans took control of Japan in 1945, it died as a state, but as a nation, it continued to live. So, fifth point is nation can be wider than the state. Okay, so nation as a concept is wider than the state. For example, हम सेकंड पॉइंट में भी इसे डिस्कस करके आए थे, सॉरी थर्ड पॉइंट में. फॉर एग्जांपल कि जो फ्रेंच पीपल है, French people are living in other parts of Europe also, not in France only. So, this way, nation is wider than the state. Next point is there can be two or more nationalities in one state. So, एक देश में वन से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इज़ इंडिया. In India, people belonging to many nations are living. Punjabis, Kashmiris, Malayalis, Marathas, Rajputs, Gujaratis,
they are living in India. Nation is more stable than a state. So nation is more stable than a state when sovereignty is taken away, state dies, but not the nation. सो इसकी एग्जांपल हम पहले भी करके आए थे, जापान एंड जर्मनी की. एट्थ पॉइंट इज अ स्टेट कैन बी क्रिएटेड वाइल अ नेशन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन. सो स्टेट जो है, स्टेट क्रिएट की जा सकती है. फॉर एग्जांपल किसी देश से अगर कोई एरिया अलग होता है तो इट बिकम्स अ न्यू स्टेट. फॉर एग्जांपल आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी बिकेम two states. Okay, and in 1947 Pakistan was created from India. But नेशन जो होती है, नेशन को कभी भी बनाया नहीं जा सकता. नेशन हमेशा इवॉल्व होती है. The state uses force, that is police power, while the nation has a spiritual and moral power. So state has a police power by which it regulates our external behavior, while the nation uses spiritual and moral power to guide the internal behavior of human beings. Next is state sovereignty and national sovereignty. So इसमें क्या आएगा? Some contemporary scholars and political scientists now suggest a difference between state sovereignty as territorial sovereignty and nation as a national sovereignty. They hold while nation has a cultural identity or an identity resting on ethnicity that is shared by all a large majority of its people, state has a sovereign territorial identity which is governed by a government of its all people. A nation state is a collective entity which combines territoriality and emotional unity and identity we are one. So इसमें बेसिकली कंसेप्ट आ जाता है वन नेशन वन स्टेट का. उसमें क्या है कि एक ही नेशन के लोग एक ही कंट्री में रह रहे हों. ओके, सो अगर किसी स्टेट में मोर देन वन नेशनैलिटी के लोग आ रहे हैं तो उसमें आएगा हमारा स्टेट सोवरेनिटी. तो अगर वन नेशन वन स्टेट का कंसेप्ट, एक स्टेट में सिर्फ एक ही नेशन के लोग आ रहे हैं, तो वो आएगा नेशनल सोवरेनिटी का कंसेप्ट. सो देयर आर 10 पॉइंट्स एंड वी आर टू लर्न ओनली 5 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एनी 4 पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ पोलिटिकल साइंस. सो हमने जो पोलिटिकल साइंस का स्कोप आता है उसे डिस्कस करना है. पोलिटिकल साइंस के स्कोप में क्या आएगा? सबसे पहले तो हम जब इसको आंसर अटेम्प्ट करेंगे वी विल राइट डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकल साइंस. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकल साइंस हम लिखेंगे पेज नंबर 1.6 से. उसमें हम रॉबर्ट डैहल की डेफिनेशन करेंगे पॉलिटिक्स, दैट इज पोलिटिकल सिस्टम is any persistent pattern of human relation involving to a significant extent power, rule, authority or control. हम इसे लर्न करके लिखेंगे. ओके, एंड वी विल ऑल्सो राइट पोलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट. ओके, सो स्कोप में हम क्या लिखेंगे? स्कोप में हमारा सबसे पहले आएगा पॉलिटिकल थियोरी. सो इसके जो हमारा स्कोप आता है, स्कोप के आते हैं हमारे 5 पॉइंट्स: पॉलिटिकल थियोरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी. इन सभी के जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, दैट इज कंपल्सरी फॉर अस. सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल थियोरी. In simple words, political theory means theory of politics, where politics means, in traditional terms, theory of state and government, and in modern terms, theory of political relations and interactions. So, political theory का क्या मतलब होता है कि जब in traditional sense, politics means only the study of state and government, while in modern terms, it is the theory of political relation and interactions. Second हमारा scope का क्या point आता है? Second is comparative politics. So comparative politics on page number 1.13.
1.13 एंड 1.12। सो हम इसका मीनिंग जो है वो जीन ब्लॉन्डल की डेफिनेशन करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। द टर्म पैटर्न्स of government refer to the three parts of study: government structure, behavior and the laws. So comparative politics क्या आता है, जितने भी हमारे national governments which are at work in different parts of the country उन्हें study करना। next is international relations। international relation में क्या आएगा, we can say that the discipline of international relation, which is also known as international politics, primarily studies relations and interaction among all the actors of international community and its member states. So international relation में जितने भी हमारे वर्ल्ड की कंट्रीज आ रही हैं उनके आपस में क्या रिलेशन आ रहे हैं वो हमने पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा फोर्थ क्या रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द सम total of the activities undertaken by the civil servants for giving effect to the public policies and decisions of the government is called public administration. So जितने भी हमारे civil servants होते हैं वो जितनी भी activities undertake करते हैं for giving effect to the policies of the government, it is known as public administration. Next हमारा क्या आएगा, political economy। political economy में क्या आएगा, in its traditional meaning, political economy is held to be that branch of the art of government which is concerned with the systematic inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation. In simple word, we can say political economy study the political aspect of economic policy making and also the economic aspect of political policy making. इसमें हमारा क्या आता है कि जब से आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो ट्रेडिशनल फॉर्म में पॉलिटिकल इकोनॉमी आता था कि जो देश की वेल्थ है, वेल्थ का कौन सा नेचर है और वेल्थ कैसे आ रही है उसे पढ़ना। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि जितने भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस का इकोनॉमी के ऊपर कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है और इकोनॉमिक डिसीजंस का देश के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट इज टू बी स्टडीड इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो उसके बाद हमारे वन वर्ड के आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन विच पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ओनली। सो इसका क्या आंसर आएगा कि जब हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट को ही पढ़ रहे हैं तो दैट इज, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। सेकंड इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सिविल सर्वेंट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू पब्लिक पॉलिसीज। तो इसका क्या आंसर आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इज इट स्टडीज रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमंग ऑल द एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, international relations. Fourth is it studies patterns of national government in contemporary world, comparative politics. Fifth is it is the most exclusive element of the state. So state का सबसे most exclusive element कौन सा आता है, sovereignty. It is the sixth is it is the community of people formed on the basis of common language, history and culture. So इसमें हमारा जो की वर्ड आ रहा है that is common language, common history and common culture. So क्या आएगा, nation. Seventh is it is the sovereign political institution of the people living in an organized society. So sovereign political institution कौन सा है, sovereign political institution is स्टेट। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ओनली। नो, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, इट इज द स्टडी ऑफ relations and interaction among different organs of the government and people. Next is
comparative politics is the study of the patterns of national government in contemporary world. Yes, it is true. Third true false. In order to participate in politics, the study of political science is compulsory. No. So, इसका आंसर आएगा false. Fourth point. All the students of political science participate in politics. No. इसका भी आंसर आएगा false. The state always need large territories. No. False. The element of state and nation are different. Yes, the elements of state and nation are always different. The state need large population to exist. No, it is not required. The state can exist even with less population also. The government is the exclusive element of the state. No, it is sovereignty. So next हमारी आएंगी fill-ups. First is dash is a territorial entity. It is state. Next हमारा आता है common history, common culture, dash, territory, government, state. So territory and government, they are the, what are these? These are elements of state. So common history, common culture, these are the elements of nation. So हमारा आंसर आएगा nation. Dash is the exclusive element of the state. What is the exclusive element of the state? Sovereignty. अगला आएगा हमारा फोर्थ पॉइंट. Political science, it is theory and politics is practical activity. Dash means the theory of politics. क्या आएगा? Political theory. Sixth हमारी आएगी filling the blanks. Public administration is the sum total of the activities undertaken by the civil servants to give effect to the dash of the government. क्या आंसर आएगा इसका? आंसर हमारा policies of the government. So MCQ. The territorial entity may have the three elements, but the absence of this element can kill a state. Which element of state is being discussed above? Option A, government. B, territory. C, sovereignty. D, population. So इसका आंसर आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना है. B, sorry, point number MCQ number 2, it is assertion reason. The sovereignty is the most exclusive element of the state. It is assertion. Reason is it provides basis on which the state can regulate all aspects of life of the people. So इसकी ऑप्शन क्या आ रही है? ऑप्शन ए, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. B,